and Startup for IGNOU students and faculty, covering different topics of common interest. The program aims at encouraging and motivating IGNOU students towards innovation, entrepreneurship, and startup. The 41st session in this series, titled Geographical Indicators, Way to Promote Startups in Traditional Knowledge, is being organized today. To discuss this topic, today we have with us Dr. Sapna Gambhir, and it is my pleasure to introduce her to you. Dr. Sapna Gambhir is Associate Professor of Computer Engineering Department and Vice President Institutions Innovation Council of J.C. Bose University of Science and Technology, YMCA, Faridabad. She has completed her doctorate in computer engineering from Jamia Millia Islamia, Delhi in 2010. She has more than 19 years of experience in academics and research and development. Her team has been awarded Leelavati Award 2021-22 under Women Innovators Rural Urban Sub-Theme by the AICTE. A highly accomplished person, Dr. Sapna has been awarded the Best Teacher Award in the year 2020 and the Best Woman Scientist Award under Research Excellence and Academic Awards in 2018. She has published more than 100 research articles in peer-reviewed journals and conferences. 3 patents, out of which one is with the USPTO and 2 are in the Indian Patent Office, have been granted. More than 5 ideas are filed for patents. She has already guided many PhDs successfully as sole supervisor. She has also participated in the UK IERI 2019 Leadership Programme, which is a collaborative initiative by the Government of UK and India. She is a principal investigator of many research projects related to the sustainable environment of government organizations. Being an innovation ambassador of the Ministry of Education, she puts her best efforts to develop a strong innovation ecosystem. I welcome you, Dr. Sapna, to today's session. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for such a kind introduction. I must first say thanks to the IGNOU for giving me such a platform to express my ideas, my feelings related to this topic. Thank you so much for inviting me. Thank you, Dr. Sapna, and I would like to invite you now to deliver your talk on the topic, Geographical Indicators, Way to Promote Startups in Traditional Knowledge. Dr. Sapna, please. Sure, ma'am. Yeah. May I share my Slappy screen? Yes, please. Yeah, thank you, ma'am. Just to confirm first, the screen is visible, ma'am? Yes, Sapna, it is. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. So today's topic for the discussion is geographical indicators. You can say the indication as well. The way to promote startups in traditional knowledge. If I'm talking about the word startup here, if I'm thinking about the actual meaning of startup, it means any profession or any team with some new idea or with some idea want to implement that particular idea in a professional way. They can start that thing from any place. That is one startup idea. Fine. But if I'm talking about the traditional knowledge as our culture, as our, you can say, environment diversity in our country, the traditional knowledge of our country, again, that depends on different locations. Fine. In my topic, you can say here the startup word. The meaning of startup here, my intention is to include with respect to the employability. Means using our traditional knowledge, which we have again accepted to receive from our ancestors or from our surroundings where we are living.
that particular knowledge, how can we, using that information or a knowledge, how can we increase the employability, how can we increase the productivity, how can we increase the economic growth of that particular location. This would be the main objective of today's session. And during these sessions, we'll discuss just the general terms related to, as the graphical indication is one part of intellectual property rights. Then during the initial session, we'll discuss the general terms of IPR, the general terms related to innovation, and then we'll move forward about the graphical indications. What are these? What are its features, characteristics? Who all can apply for the geographical indications? How one person who is living in a particular area wants to associate with these geographical indications. What can be the ways? What are the benefits in order to have association with these type of tags? That all things that complete will be the outline of our session for today. Fine. Now I'm starting with the very general term. If I'm talking about the traditional knowledge is again which we have from our ancestors, from our you can say, which is passed by from generations to generations, or from centuries to century, to one generation to the another. Fine. Now, if I'm talking about some innovation and invention or discovery related words, there are three words which comes in our mind. One is a discovery, second is the invention, third is the innovation. There is a very, you can say, hairline difference between the term invention and innovation, though very clear difference is in between the discovery and other two terms, right? If I'm talking about the discovery means the thing which is already existing in nature. Through some process or by some means, we just explored that. That is a discovery. Discovery of, you can say, any new planet in a solar system, discovery of a, you can say, new gas in our environment, discovery of something जो already exist कर रहा है nature में. Fine. And the invention is through some experiments, through the experimentation process in a lab, when we come up with some new solution, new thing, that is an invention. If I talk about the examples, means you can say invention of first desktop, invention of first, you can say, mobile phone, invention of electric bulb, invention of chair, first time when it was manufactured, first time when this particular idea came in a mind of a first person, that time that was an invention. But the third term is a innovation. Innovation means at the first time when that particular thing happened, then that is an invention. But over the period of time, the optimization in that particular invention is known as an innovation. Means earlier we have a, you can say, that wired phones which were, they are having the dial just to dial the number. And over the period of time, now we are having the touch screen phones. And that touch screen phones are, I think, having a more features than that of our laptop. That is an innovation actually. That is an innovation journey of a mobile phone. Or if I am talking about the next example, you can say the first time when a person came with an idea of a wheel. I think the idea that came in that person's mind, that might be a solution for a bullock cart only. But currently, if I'm talking about the current scenario, now we are having a various different varieties of tires, wheels, currently that take a shape or a name with a wheel. Now we are having a tube wheel, tubeless wheel, or you can say wheel with a alloy wheel, something like that. All these terms are related to innovation. Discovery, already existing, invention, first experimentation in the labs, innovation over the period of time, that particular thing. If this particular example, which I have mentioned already,
the first wheel, but over the period of time, currently we are having a different varieties or the sizes of wheels even. If I'm talking about the difference between the discovery and invention, the first watch, whether that is a wrist watch, whether that is, you can say, our wall clock, that is invention. And our solar system, any new asteroid, meteoroid, planet, that is a discovery, as it is already existing in the our solar system. Just we have to explore or find its presence. And this is a telephone example. And in earlier times, the particular phone which we had are just like this. Only the, you can say, in a general scenario, the red and green buttons are there. And currently in our phones, red and green, other than the red and green button, lots many features are there. I think in our hand, we are carrying a small laptop with so many features for that. That is an innovation. More examples, just like fire. If I'm talking about the fire, fire is again an example of discovery. Newton's law of gravitation, that is, जो भी चीज होगी वो है आपकी ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशन फोर्स, वो आपकी नीचे सरफेस पे ही गिरेगी. Again, this particular concept is in existence in the nature, but Newton's discovered it. That's why it's a discovery. And if I'm talking about the nails, keel, that is an invention. But over the period of time, if I'm talking about the current scenario, currently we are having a lot many variations of this nails as well. Nails का head आपका है 2 groove भी होगा, 4 grooves भी हो सकता है. That again depends on the various types of nails or our requirements also. Now, moving forward, among these 3 terms, discovery, invention, innovation, I am picking the word innovation. If I am talking about the innovation, the 2 terms comes in my mind. Innovation can be a process innovation, that can be a product innovation. Product innovation, any particular device, any particular physical device which I have to use for my requirements for any application, that is a product innovation. Or the second is a process innovation. Process innovation means you can say you can optimize, you are optimizing any delivery approach, service approach, or any process which is in existence, that is an innovation. Means process innovation about implementing a new or improved production or a delivery approach, including changes in the operational methods, the techniques used, and the equipment or a software. By reading this, the first example that comes in my mind is, you can say, the service of our Swiggy, Zomato. उन्होंने क्या किया? स्विगी और जोमेटो ने ये कहा कि हाँ, इस टाइम पर आज से कुछ टाइम पहले तक, if I'm talking about the time 4 to 5 years back, at that time, if you want to order something from any eating point, the first thing that came our mind was, क्या वो particular shop या particular eating point has a home delivery facility? If yes, then it's okay. Otherwise, it would be very difficult for me just to go and then tell them to pack the things and उसके बाद घर आ जाना. But currently, no need to check whether that particular eating point is having a home delivery facility or not. You have to, or you can use the special services, delivery services that can pick your order from that specific eating point and deliver it at your place. That is a process innovation. Similarly, you can say Blinkit hai, and many more, Amazon hai, many more e-commerce or home delivery sites. You can put all that under this process innovation. And if I'm talking about the product innovation is the introduction of a new or improved good or product. These innovations or inventions or change may have to do with improving technical specifications. In this, you can put any new mobile phone under this category. Every new model of mobile phone is always having a better and a new specifications of features than that of its earlier version.
That can be, you can say mobile phone, you can say laptop, or you can say any electronic gadget even. You can put that thing in a product innovation. Then, once we talked about the innovation, two types of innovations are there. One is a product, second is a process innovation. Now the question comes, how can we protect our innovation? अगर आज मेरे माइंड में एक चीज आई है, अगर आज मैंने एक न्यू चीज बनाई है, मेरे माइंड में जब फर्स्ट टाइम आया, अगर कोई सर्विस है, इफ मेरे पास माइंड में आया कि हाँ जोमेटो की एक सर्विस है, एक डिलीवरी सर्विस है, मुझे वो चीज बनानी है, हाउ कैन आई प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर न्यू आइडिया कि वो कोई उसे ले ना ले, कोई उसको मिसयूज ना करे. मेरे नाम से अगर मैं उसे मार्केट में लेकर आई हूँ तो ये नेम मेरा होना चाहिए. आई शुड बी बेनिफिटेड विद दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन, आइडिया सोल्यूशन. This is possible only through that particular innovation. Protection is possible only through intellectual property rights, that is IPR. If I am talking about the IPR, first I'll pick the word property. Property means किसी के ऊपर भी मेरा अपना, the something that is owned or is in possession. If I am having my car, I am an owner of my car. That is my property. If I am an owner of a flat or a house, that is my property. It means in case of, if I'm talking about the two terms, one is the real property. Real property means my flat, my car, my table, my chair. All that things have a physical boundaries. Physical boundaries means dimensions. Dimensions means if I am talking about the car has its own dimensions. कितनी बड़ी है वो, कितने उसके कार में बड़ा आ रहा है. Table has its own dimensions. If I am talking about the flat, 2 BHK, 3 BHK, 3 BHK plus 1, whether that is on ground floor, first floor or a second floor. कार है, कार की अपनी physical boundaries है. Only 5 persons can sit in the car. टेबल की अपनी बाउंड्रीज हैं. Intellectual rights, this particular thing is not there. No boundaries of its uses are there. If I am a user, I want to use the innovation of any person. Use means as a customer, I can use it. I can use it any number of time. But if I want to use it for my business purpose, for commercialization, then I have to take the permission from the person who is owning, who is having that particular innovation protection. This is the difference between the word property if I'm talking about the real property and if I'm talking about the intellectual property rights. And if I'm talking about the intellectual property, it means intellectual means inventions, products of that are the results of our creative human labor, means products that come out of our intellect, that can be, you can say, result of our mind exercise, that is a result of our careful thinking. Just imagine now, you can say an example. एक छोटी सी सपोज कीजिए, एक अप्रैल है, एक सूट है, एक कुर्ता है, उस पर एक डिजाइन मैंने निकाला. डिजाइन जो है वो किसने यूज किया? स्यूइंग मशीन के थ्रू मैंने यूज किया दैट डिजाइन. नाउ द डिजाइन जो है वो एम्ब्रोज किया स्यूइंग मशीन ने. स्यूइंग मशीन इज नॉट इंटेलेक्चुअल, बट दैट पर्टिकुलर डिजाइन, जो डिजाइन बनाया गया, उसमें एक पर्टिकुलर पर्सन, वर्कर जो है, उसका मेंटल वो लगा, उसका दिमाग लगा, डिजाइन कैसा होना चाहिए, उसकी वो क्रिएटिव ह्यूमन लेबर थी. दैट कैन बी एन इनोवेशन. सिमिलरली फर्स्ट टाइम जिसने कभी किसी ने चेयर जो बनाई थी, उसके जो डायमेंशंस थे, क्या चेयर का बैलेंस एक लेग से हो सकता है, 2 लेग से हो सकता है, क्या उसमें 3 लेग्स चाहिए होंगे? व्हाट कैन बी अ डायमेंशंस, व्हाट कैन बी द पर्टिकुलर, यू कैन से लिमिटेशंस, जो कि एक कारपेंटर को माइंड में रखनी है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दैट चेयर. दैट पर्टिकुलर थिंग इज अ क्रिएटिव ह्यूमन लेयर. बट उसके बाद कारपेंटर्स ने जो बार बार यूज किया उसे, दैट इज नॉट एन क्रिएटिव लेबर. वो सिंपल एक फिजिकल लेबर कर रहे हैं. दैट्स इट. दैट इज यू कैन से द डिटेल्स ऑफ अ इंटेलेक्चुअल.
or if I am talking about the rights, it means my rights, my exclusive rights. Means for that, if I am having an idea, if I am an owner of that idea, so I can decide commercially मैं उस आइडिया को किसे सेल आउट कर सकती हूँ, कितना बना सकती हूँ, किसको मैं रेंट आउट मीन्स लाइसेंसिंग ऑफ दैट कर सकती हूँ. That is the complete details of what actually the intellectual property right is. Now, all these are the components of intellectual property. In the very abstract, we divide it into two. One is the industrial property and second is the copyright. If I'm talking about the copyright, it covers, you can say, all the literary work, artistic work that comes, you can say novels, poems, plays, musical works, drawings, photographs, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, डिजाइंस इवन, और एक छोटे से उसमें जैसे हम कहीं इवन द एनिमेटेड कैरेक्टर्स ऑल्सो, इफ यू थिंक अबाउट द टॉम एंड जेरी, पेपा, these things or the that are again covered under this copyright flag. And the second category is industrial property. One is the patent, then trademark, then the industrial design, then the geographic indications and the trade secret. Fine. Now, patents means any advancement, technological advancement, this comes under the patent. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. सपोज कीजिए द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड बाय टेस्ला कंपनी फॉर देयर इलेक्ट्रिक कार्स, सपोज एज एन एग्जांपल, दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी comes under this patents flag. If I'm talking about the trademarks, then the logos, that logos can be, you can say, any Adidas, Nike, or even if I'm talking about the Tesla car, Tesla's or also Audi's ka logo hai, that comes under this trademark. Industrial design, designing of that. Suppose if I'm talking about the any car, you can say any Audi, Mercedes या फिर Santro, any type of a car, उसका जो look and feel है, aesthetic characteristics, कैसा वो दिख रहा है, that comes under the industrial design. And the last is the trade secret. Trade secret means any details, any special processes of any business model, or you can say ingredients, any compositions, that comes under the trade secret, right? And the last one, which is our today's topic, that is geographic indications. Any product which is dependent or very much close associated with the location. Geography means the location. That comes under this geographic indications. We'll discuss this thing in detail in my later PPTs. As all, you can see the three pictures on the screen. One is the Agra Petha. Second is the Tirupati Laddus. Third one is the Banarasi Sari. I am pausing here for few seconds just to analyze, is there any similarity between these three products? For all you, please analyze it. क्या इसमें ऐसा कुछ भी आपको लगता है कि कोई भी similarity है? Why can't we think about, you can say, as I'm residing in Faridabad, why this is Agra Petha? मैं इसे फरीदाबाद पेठा या दिल्ली पेठा भी बोल सकती हूँ. क्या बोल सकती हूँ? Is it okay if I tell is this is a Faridabad Petha or a Agra Petha, or you can say any city, Bangalore Petha or some Ajmer Petha, something like that, or this is a Banarasi Sari. Can I give it another location's name? No, big no. As these products are very much associated with that particular location. Means इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं जो खासियत है वो क्या है, जहां वो बनाया जा रहा है, उसके एनवायरमेंट कंडीशंस, उसकी ज्योग्राफी कंडीशंस, वो उस प्रोडक्ट की यूनिकनेस है.
That's why the name with this product is very much important. And हम इन्हें separate out नहीं कर सकते, और even we can't change the location or the name of that location along with this product. All these are the GIs, that's why. GIs, geographic indications. If I'm talking about the geographic indications, indication of a product that originates from a given geographical territory. If I'm talking about the geographical indication territory, it means, just a minute. My screen is visible? It was visible a moment ago. Okay. Now it's visible? Yes, now it is visible. Yeah, thank You have to share the screen. Yeah, you have to put it in. It is now perfectly fine. Now visible, no? Okay, Yes, okay, yes. thank you. If I'm talking about the geographical indications, indication of a product that originates from a given geographical territory. Means if I am talking about the Kashmiri kesar, it means वहां पर जो केसर बनता है, केसर की जो कल्टीवेशन वहां हो रही है, वहां पर उनके जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, सॉइल कंडीशंस हैं, उस पर्टिकुलर केसर की क्वालिटी पर उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है. That's why we put this thing under geographical indications. Indication of protection between characteristics of a product, जो उसका टेक्सचर आ रहा है खाने में, या मैं उसमें किसी भी उसमें डालती हूँ डिश में, उसमें जो कलर आता है वो उसकी स्पेशलिटी है. The use of GI may act as a certification that the product possesses certain qualities or enjoys a certain reputation due to its geographical origin. फर्स्ट टाइम हम जाते हैं, सपोज हम कहीं घूमने गए, आज अगर मैं सपोज कीजिए कहीं जाती हूँ कश्मीर, मुझको घूमने का मौका मिल रहा है, मैं कश्मीर, श्रीनगर यहाँ कहीं जाती हूँ, सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आता है, यार वहाँ की ना पश्मीना शॉल्स बहुत अच्छी हैं, मैं वहां पर चेक करूंगी उसे. मीन्स क्योंकि वो पर्टिकुलर जो पश्मीना शॉल्स हैं, शॉल्स की जो वीविंग है, जो उनको बनाने का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो वहाँ की यूएसपीज हैं, यूनिक फीचर्स हैं उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया की. मीन्स दैट इज अ सर्टिफिकेशन. आज मैं अगर कह रही हूँ मार्केट में मैं कहीं से कोई चीज खरीदना चाह रही हूँ, तो मेरे माइंड में सबसे पहले आएगा कि क्या अगर ऑरेंज लेने हैं तो क्या ये नागपुर का ऑरेंज है. अगर मुझे सपोज कीजिए रसगुल्ला लेना है, क्या स्पॉन्जी रसगुल्ला वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला है, ओडिशा का रसगुल्ला है. मीन्स ये एक सर्टिफिकेशन है इस चीज के लिए. अगर मैं जनरल एक फीचर्स की बात करती हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन फीचर्स दैट आर रिलेटेड टू द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, वन इज अ टिपिकलिटी. Typicality means the quality of a characteristics of that product that makes that product actually unique. जिसकी वजह से वो मार्केट में जाना जा रहा है, जिसकी वजह से वो मार्केट में उसके सिमिलर प्रोडक्ट से डिफरेंट है. दैट इज अ टिपिकलिटी. एंड ड्यू टू दिस टिपिकलिटी, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, that can be a Agra Peretha, Banarasi sari, or you can say I'm talking about the Kesar, Pashmina shawl. That particular product has its own reputation. Or in some other way you can say, हो सकता है कि वो आपको रेप्यूटेशन उसकी अपने आप में अच्छी है, और जनरल अगर मैं फाइनेंशियल में बात करूं, क्योंकि वो क्वालिटी आपको एक फिक्स क्वालिटी दे रहा है, तो मे बी उसकी प्राइसिंग थोड़ा वो हो, मार्केट से बाकी प्रोडक्ट से आपकी जो उसकी प्राइसिंग है मे बी हाई हो. मीन्स वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर सर्टिफिकेशन है जीआई टैग की, वो आपको ये इंश्योरेंस दे रहा है कि एक्चुअल में जो उस प्रोडक्ट की फीचर्स होनी चाहिए, दैट प्रोडक्ट इज हैविंग दैट फीचर्स. इररिस्पेक्टिव वो प्रोडक्ट आपका एक्स इंडस्ट्री से आ रहा है, या एक्स प्रोड्यूसर ने बनाया है, या वाई प्रोड्यूसर ने बनाया है, या जेड प्रोड्यूसर ने बनाया है. If the same pashmina shawl is weaved by the X producer, Y producer, or the Z producer, but if the three of the producers all are having the GI tag,
it means the quality of all the producers will be same. This is the meaning or the importance of the certification for any, you can say, product which is very much associated with that given geographic territory. In a general sense, if I talk about the GI, it means there is a link between PP. PP is a product which is very much linked with the place. Place is any geographical location. If in general sense, if I am talking about the geographical indications that are covered as a component of intellectual property right, which I have discussed in my earlier slide, it's the one component of an intellectual property right under the Paris Convention for the protection of industrial property. Actually, the Paris Convention was signed in Paris in 1883 and still it's in force. This was the major step actually that was taken to help the creators or the producers to ensure that their intellectual work, their original work, their efforts were protected in other countries as well. Means if I am talking about the Agra Petra, then no other country can produce a product and have a name with the name Agra Petra. No, this is my right. This is my country rights. This is the thing. At the international level, GI is governed by World Trade Organizations, WTO, agreement on TRIPS, that is a trade-related aspects of intellectual property rights. Under TRIPS, many countries have signed this particular agreement and all the member countries agreed to set out the minimum standards of protection to be provided by each member. अगर सपोज कीजिए मेरे पास कोई भी टेक्नोलॉजिकल आइडिया है या कोई डिजाइन है या जीआई का है, व्हाट कैन बी द प्रोसीजर फॉर एनी कंट्री? मिनिमम क्या प्रोसीजर होगा जस्ट टू चेक कि वेदर टू ग्रांट दिस पर्टिकुलर राइट्स टू दिस पर्सन और दिस ऑर्गेनाइजेशन, गिव इट और नॉट, व्हाट कैन बी द प्रोसेस ऑफ दैट, है ना? उसमें सपोज कीजिए अगर एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर एक्स पर्सन ने, एक्स ऑर्गेनाइजेशन ने, एसोसिएशन ने एक पर्टिकुलर चीज के लिए अप्लाई किया है जीआई के लिए, एंड आफ्टर सम टाइम एक वाई ऑर्गेनाइजेशन ने भी उस एक कंपोनेंट के लिए अप्लाई किया, तो किसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी? व्हाट कैन बी द प्रायोरिटी डेट फॉर दैट एंड व्हाट कैन बी द कॉमन रूल्स? सपोज कीजिए अगर आज मुझे पेटेंट मिल रहा है या जीआई मिल रहा है, व्हाट कैन बी द लाइफ स्पैन ऑफ दैट? And after that lifespan, what can be the various steps which I have to follow to further have the rights on that components as well? All these things are covered under the TRIPS law actually, TRIPS agreement. In India, we are having the Geographical Indications Registration, which is administrative by the Geographical Indications of Goods Act 1999 actually, but this particular act came into force with effect from September 2003. If the main office of this GIS, Geographical Indications Registry, is at Chennai, I am talking about registry actually. जब हम इसमें अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद सपोज कीजिए मेरी जो रिक्वेस्ट है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जीआई के लिए अप्रूव हो जाती है। अप्रूव होने का मतलब है कि मेरी जो रजिस्ट्री है, रजिस्टर में उसकी एंट्री होती है। रजिस्टर में एंट्री मींस द रजिस्टर इज हैविंग टू पार्ट्स, वन इज अ पार्ट ए, सेकंड इज अ पार्ट बी। पार्ट ए मींस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग और द रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट है, क्या फीचर्स हैं, क्या यूनिकनेस है, किस लोकेशन से रिलेटेड है। एंड द पार्ट बी इज रिलेटेड टू द पर्सन्स, एसोसिएशंस, NGOs, किन सेट ऑफ और द कलेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने इस पर्टिकुलर जीआई के लिए अप्लाई किया है, डिटेल्स ऑफ दैट। अगर सपोज कीजिए मैं ये चाहती हूँ कि आज अगर मैं एक यहाँ पर एक फैक्ट्री लगाऊं और मैं ये बोलूँ कि हाँ मुझे यहाँ पर बनारसी साड़ी बनानी है, नो आई कांट डू दैट
बनारसी साड़ी का जो टैग है एक पर्टिकुलर एरिया को दिया हुआ है, उस एरिया में जो सेट ऑफ और द ग्रुप ऑफ पर्संस हु आर वीविंग दैट पर्टिकुलर साड़ी, दैट पर्संस आर हैविंग ओनली द राइट टू गो फॉर दैट बनारसी साड़ी ओनली। अगर मुझे इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में आना है, या हो सकता है कि मेरे एंसेस्टर्स उस प्रोफेशन में थे, कभी उस प्रोफेशन को मुझे स्टार्ट करना है, आई हैव टू गो देयर जस्ट टू हैव अ लिंकेज विद दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन जिसका नाम आपका पार्ट बी रजिस्ट्री में, रजिस्टर में है। उनसे मुझे करना होगा, अपने प्रोडक्ट को अप्रूव करना होगा, रजिस्टर्स में एंट्री करवानी होगी, ओनली देन आई कैन गो फॉर फर्दर। If I'm talking about the duration of GI is at the first end, it's at 10 years, and after 10 years, it can be renewed for every 10 years जब तक association group चाहता है उसको, as long as it is in use. If now the evolution of GI, as we have already said, इंडिया में जो GI के रिलेटेड में था एक्ट हमारा, that came into force from 2003. Now it's a evolution related to the product, GI product, which is in September 2003 GI came in force, active हमारी कंट्री में हुआ। October 2003 the first product, the first application for a GI product received from a tea board for Darjeeling tea in October 2003. And in October 2004, tea board got the GI tag for this tea, that is a Darjeeling tea. Now the question comes, who all can register for the GI? किसी भी प्रोडक्ट के GI के लिए कौन कौन, who all are the eligible persons to apply for the GI? कौन कौन कर पाएगा उसमें? The producers association register that. सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर एरिया में जनरल सी अगर मैं बात करती हूँ, सपोज टू द एग्जांपल ऑफ बासमती राइस, अगर मैं बासमती राइस की बात कर रही हूँ तो बासमती राइस में पंजाब, हरियाणा एंड उत्तराखंड और कुछ एरियाज उनके और हैं, अराउंड 7 स्टेट्स आर देयर। उनका इकट्ठा होकर, ग्रुप होकर एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स ने बासमती के लिए आपका GI टैग अप्लाई किया। बासमती के लिए GI टैग अप्लाई किया तो अब उसी लोकेशन को, मींस हम लोग क्या करते हैं उस टाइम पर डिस्ट्रिक्ट्स, एरिया स्पेसिफाई करते हैं हमारे उसमें मैप में कि दिस पर्टिकुलर एरिया, इस पर्टिकुलर एरिया में इस एसोसिएशन ने बासमती राइस के लिए GI टैग अप्लाई किया है या उन्हें GI टैग मिल चुका है। और उस केस में बहुत सारी आपकी जो गवर्नमेंट कंपनीज है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इवन दे हेल्प अस आल्सो। लाइक अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ तो जैसे बहुत सारे हमारे पेटेंट फैसिलिटीज में सेंटर्स होते हैं, है ना। सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए, PFCs ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, है ना, they help us with the reference to the registration of GI in West Bengal. वेस्ट बंगाल के रिगार्ड में कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका आपका उस टेरिटरी, उस लोकेशन से रिलेटेड यूनिकनेस आ रही है, तो PFC सेंटर्स जो एसोसिएशंस हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी हेल्प करती हैं GI एप्लीकेशन सबमिशन के लिए। और अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे दूं, ओडिशा डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल है जैसे, दे आर फैसिलिटेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन विद रिस्पेक्ट टू टेक्सटाइल। ओडिशा के में और उसके नियर बाय उसमें जो भी आपके टेक्सटाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जिनके ऊपर आपकी जो एनवायरनमेंट है, लोकेशन है, उस पर्टिकुलर टेरिटरी की यूनिक फीचर्स आ रही हैं, तो आपका ओडिशा डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल हेल्प करती है उन पर्सन्स के लिए उन्हें GI एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। और any NGO can also move ahead for this. Association of persons or the association of producers or any organization or authority established by law representing the interest of producers of concerned goods may apply for the registration of GI also. If I am talking about the significance of this GI,
It helps the community of producers to differentiate their products from other fake products. आज अगर मेरे प्रोडक्ट पर GI टैग लगा है, जो कि मैंने एग्जांपल अभी भी दिया, suppose there are 5 companies, 5 brands, brand A, B, C, D, E. 3 brands are having a GI tag, but two companies of the 2 brands are without GI tag. It means the brands having a GI tag, that particular companies can ensure you कि एक पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट में जो होना चाहिए, अगर मैं खाने की डिश की बात करती हूँ जो टेस्ट होना चाहिए, एप्पल की बात कर रही हूँ तो उसको पहनने में जो उसकी फीचर्स आनी चाहिए, जो भी उसके धागे में या पर्टिकुलर रॉ मटेरियल में जो फीचर्स आनी चाहिए, गारंटी है वो तीनों में आपको सेम मिलेंगी, उसको बनाने का वे वो सेम मिलेगा. बट फॉर द प्रोडक्ट्स विदाउट द GI टैग कोई उसकी श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है. आपको क्या होगा, आपने अगर परचेज करना है आप अपने रिस्क पे परचेज कीजिए उसे. तो क्या हुआ, सिंपल एक जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया उसने बहुत इजीली उन्होंने उसे डिफरेंशिएट कर दिया कि कौन सा फेक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट इसके पास गारंटी नहीं है. बट इफ आई एम हैविंग अ GI टैग आई कैन गारंटी यू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल हैव ऑल द फीचर्स जो आपके माइंड में है उस चीज को खरीदते हुए, जो आपने स्टडी किया है, इस टाइप की चीजों में यही चीजें होती हैं, वो सब आपको मिलेगा. लीगल प्रोटेक्शन टू प्रोड्यूसर्स. अगर सपोज कीजिए आज मेरे पास GI टैग है, आगरा पेठा अगर है, आगरा के उसमें पर्टिकुलर एरिया में बन रहा है, अगर कोई पर्सन आज फरीदाबाद में बैठकर मैं आगरा पेठा के नाम से कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ किसी पर्टिकुलर उसमें, तो देन दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन फ्रॉम द आगरा कैन sue me. मुझे वो लीगली वो कर सकते हैं, sue लीगली वो मुझे कोर्ट में कॉल कर सकते हैं, why you are doing this. उसकी आपकी जो जनरल उसमें है उसके मेरे फाइन चार्जेस हैं या बाकी चार्जेस हैं उस चीज के लिए. provides higher value, but obviously if I am being a producer, if I am guaranteeing you कि हाँ आपके माइंड में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर जो फीचर्स हैं, all features will be there in my product. And if I am charging a bit more than the other products, मुझे लगता है कि being a user, being a customer, मैं हमेशा रेडी होंगी उस प्रोड्यूसर को या मार्केट पर्सन को देने के लिए. And this will increase the higher value of that product. Promotes the rural, tribal income and employment. जो चीज आज तक ट्राइबल उसमें थी या रूरल एरियाज में थी, उनकी जो भी आपकी स्किल थी, that particular skill, now currently that is in market, persons are appreciating that. पहले वो चीज एक छोटी सी जगह में बंद के रह गई थी कहूंगी, बट आज कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा रही है. आज अगर मुझे लग रहा है कि नागपुर के ऑरेंज जो हैं वो बहुत टेस्टी हैं, आज मार्केट में उनका नाम है विद द GI टैग, देन दैट पर्टिकुलर एसोसिएशन क्या होगा, उसकी वो प्रोडक्टिविटी, उसकी वो कल्टीवेशन इंक्रीज करेंगी. इंक्रीज करने के लिए आपको उतने ही वर्कर्स को काम पर लगाना पड़ेगा. उतने ही वर्कर्स को आप काम पर लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयबिलिटी आप दे रहे हैं. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयबिलिटी, as I said earlier also, that's why I am putting my word startup in the title. Startup doesn't mean by its the actual meaning कि हाँ आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो. Here my concern is for the startup जहाँ पर उस particular area का GI tag है. Through GI tag I can increase the employability of that particular region persons. Promotes and protects the traditional knowledge and the traditional cultural expression. जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज जो हमारे एंसेस्टर्स के पास थी, धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हुई, आज उनको एक मार्केट ब्रांड मिल रहा है. एंड दैट इज स्प्रेडिंग फ्रॉम देयर इवन होम एरियाज एज वेल. अपने होम एरिया से निकलकर वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जा रही हैं आज की डेट में. That is a promotion of that. Obviously, identity of place. मे बी आज जनरल मुझे ना मालूम हो किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में, अगर मैं जनरल बात करूं मे बी कि एक पर्टिकुलर एरिया की इतनी एग्जिस्टेंस ना हो, बट व्हेन वी आर यूजिंग अ प्रोडक्ट, GI प्रोडक्ट,
विच इज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर लोकेशन, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन का नेम हमें बहुत जल्दी याद आ जाता है, बहुत जल्दी हमारे माइंड में बैठ जाता है, और कहीं ना कहीं ये चीजें आपके टूरिज्म को बढ़ाती हैं। आज अगर मेरे माइंड में आता है कि हाँ मुझे दार्जिलिंग घूमने जाना है, तो फर्स्ट माइंड में मेरे आएगा हाँ वहाँ के टी गार्डन्स मुझे देखने हैं। दैट विल इंक्रीज द टूरिज्म। Health and preservation of natural resources, that is a but obvious thing. Now the other question is, what are the things that can't be registered in India? ऐसा कोई भी टैग, ऐसी कोई भी चीज जिसकी उसमें कंफ्यूजन आ रही हो, कभी आप रजिस्टर नहीं करवा पाएंगे। ऐसा कोई भी जीआई प्रोडक्ट जो कि कहीं ना कहीं किसी रिलीजन को, किसी भी रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट कर रहा हो, यू कांट गो फॉर द जीआई प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन। Things which would otherwise be disentitled to a protection in a court, अगर उसकी पर्टिकुलर जो चीज है ना, वो आपकी किसी भी चीज को इंसल्ट कर रही हो, कोर्ट के किसी भी लॉ को आपके वो कर रही हो, आप उसे जीआई टैग में नहीं लेके जा सकते। जनरल जेनरिक नेम, अगर मैं सिंपल कहती हूँ आई एम हैविंग दिस माउस, आई एम हैविंग अ माउस, मुझे इस माउस का जीआई टैग करवाना है, नहीं यार, ये तो जनरल है। जनरल हर जगह पर आपकी इंडस्ट्रीज है, वहां बन रहा है, और वो इंडस्ट्रीज थ्रू आउट द इंडिया फैली हुई है। हाउ कैन यू गो फॉर द GI टैग ऑफ दिस प्रोडक्ट? नो, यू कांट। और GI टैग के लिए भी ऐसा होता है कि पर्टिकुलर लिमिट्स हैं हमारी, कि सपोज कीजिए इतने पर्टिकुलर एरिया तक का ही रीजन में कवर कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में मैंने एक प्रोडक्ट लिया, उस प्रोडक्ट में जो रीजन कवर किया वो ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द कंट्री कवर कर लिया। नो, यू कांट गो फॉर दैट। सम स्पेसिफिक रीजन यू हैव टू सिलेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर GI प्रोडक्ट, क्योंकि रीजन जितना बड़ा होगा उतना ही आप उस GI प्रोडक्ट को डिल्यूट करते चले जाओगे। If I am talking about the GI protection, 3 ways are there. Sui generis system means, जैसे मैं अभी जनरल एक बात कर रही थी कि एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को सर्कुलेट करना, हाउ वन एसोसिएशन, वन ऑर्गेनाइजेशन और एन NGO कैन गो फॉर द GI प्रोडक्ट एप्लीकेशन यूजिंग कलेक्टिव और सर्टिफिकेशन मार्क्स। अगर मैं जनरल बात करती हूँ, सर्टिफिकेशन मार्क्स में कहीं ना कहीं 2 थिंग्स आर देयर। वन इज फॉर ट्रेडमार्क्स, लोगो। अगर मैं टिक मार्क बोलती हूँ तो एवरीवन कैन सी या इट्स अ ट्रेडमार्क ऑफ नाइकी और एनीथिंग एल्स, ठीक है। बट उस केस में क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर ट्रेडमार्क मार्क्स होते हैं वो आपके ट्रांसफरेबल होते हैं। इफ कंपनी वांट्स, दैट कैन ट्रांसफर दैट पर्टिकुलर लोगो फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, बट दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अ GI प्रोडक्ट। GI प्रोडक्ट आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, GI टैग आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर मैं ये चाह रही हूँ कि हाँ मेरे पास GI टैग है मेरी कंपनी का प्रोडक्ट में, एंड आई वांट टू ट्रांसफर दैट पर्टिकुलर GI टैग टू माय सिस्टर्स कंपनी, ब्रदर्स कंपनी और सम अदर कंपनी, नो आई कांट डू दैट। If that particular company wants the GI tag for their product, they have to follow the complete steps. ऐसे ट्रांसफर नहीं होगा, right? Now the goods covered under this: agriculture, textile, natural, handicrafts, foodstuff, manufactured. Actually, for every type of GI product, classes are there. क्लासेस में अगर मैं जनरल लेती हूँ तो क्लासेस में क्या आएगा हमारा, टोटल 34 क्लासेस आते हैं। जितने भी GI प्रोडक्ट्स हैं उन्हें 34 क्लासेस में सेग्रीगेट किया गया है। कुछ एग्जांपल्स आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, लाइक द क्लास 1 केमिकल्स। रिलेटेड टू केमिकल्स आपके जितने भी GI टैग्स हैं, मे बी उनके ऊपर आपका टेरिटरी, इन्वायरमेंटल, लोकेशन फैक्ट है, दैट कम अंडर द क्लास 1। क्लास 15 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आपकी बॉबली वीना है, अगेन दैट इज अ GI, उसका क्लास 15 है आपका। सिमिलरली फॉर द पेपर, कार्डबोर्ड, इंस्ट्रक्शनल एंड टीचिंग मटेरियल्स, फर्नीचर, मिरर्स, टेक्सटाइल फॉर द 24। टेक्सटाइल में हम जितनी भी, मैंने बोला आपको, कांजीवरम साड़ी है, बनारसी साड़ी है, ये सारी की सारी आपकी 24 क्लास में आएंगी। एंड क्लास 30 फॉर द कॉफी, टी, कोकोआ, सुगर, राइस, बासमती राइस का हमने एग्जांपल लिया, दैट कम अंडर दिस क्लास 30। Now these are the few examples that are related to, one is the agriculture goods, one is the Darjeeling tea, second is the Pokali rice, and third one is the Mahabaleshwar
strawberry. And these are the examples of handicraft goods. One is the Mysore silk, second is the Madhubani painting, and third one is the Toda embroidery. This is the GI tag for the foodstuffs. First one is the Bikaneri bhujia. Second one is the Rasgulla of West Bengal. Even the Odisha and the West Bengal, both are having the GI tag, different tag, different product, different tag. And under my case study, I'll cover this. And the third one is the Tripati Laddu, which I have already mentioned. And the other is the manufactured good. First one is the Coimbatore wet grinder, and second one is the Kanoj perfume. Basically, the Coimbatore wet grinder, that is a food preparation appliance, and it has been recognized as a GI by Government of India in 2005 and 2006. And this Kanoj perfume, it gets the GI tag in year 2014. And even if a product is having a GI tag, then it will be very easy for that particular group of producers to export that product at the global level as well. Like this Kanoj perfume, and this is export in around more than 20 countries actually, such as UK, US, Australia, UAE, and many more. These are the natural goods. One is, which you can say in a first, that is a Makrana marble, and the second one is embedding traditional brands in global space. That comes under the natural goods. These are few one: Kesar, Basmati, Rajma, and the Bikaneri bhujia. You can say Darjeeling tea, Makrana marble, Kanjipuram sari, and Ratlami same. Katputlis of Rajasthan, Bagh printing of Madhya Pradesh, Bengal, Patachitra, Varli painting, Bidri ware, and paintings. And this is the eating corner, you can say Maghi pan, Kashmiri saffron, Shahi lychee, Kurg orange. All these are the GI tags. Now come to what is the process in order to apply for the GI tag. Once an organization or an association submit their application for the GI product, examination hogi. Examination to check whether this product is having that unique features related to their territory or not. Based on that may be accepted, that may be rejected, or objections may raise. For the objections, opportunity for hearing is there, जिसमें दोनों parties वो अपने points को defend करती हैं, and based on that the decision will be taken. But once it is accepted, then the second step is publication of that particular information in a GI journal. Publication of that particular information in a GI journal means now currently that is in a public domain. If any opponent or a competitor of that wants to oppose that particular publication, that organization may कर सकती है वो organization. Fine. एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है, तब तक हुआ ठीक है, नहीं तो उस पर्टिकुलर जर्नल की इंफॉर्मेशन की जो एंट्री है वो आपके जीआई रजिस्टर में हो जाएगी. जीआई रजिस्टर में होने का मतलब पार्ट ए एंड पार्ट बी. Part A is having the information related to the product, and Part B is having the information related to the details of producers, details of the organizations, associations, and NGO who have applied for the GI product. And then the registration certificate will be issued. But after the GI journal publication information, if any opposition comes, then hearing हो सकती है. सभी अपने अपने पॉइंट्स को डिफेंड करते हैं बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन. दैट पर्टिकुलर यू कैन से जो भी अपोज किया गया है
वो अप्रूव भी हो सकता है, डिनाई भी हो सकता है. दैट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड पार्टी. This is the complete process of our GI process. And these are the few GI tags for the GI products. In this, Darjeeling tea is there, Madurai Mali is there, rice is there, Nagpur Santra is there, Nilgiri tea is there. But one thing which you can observe in this means, अगर मैं एक जर्नल बात करती हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम तक के लिए, अगर मुझे देखना है कि हाँ ये GI टैग है या नहीं है, फर्स्ट थिंग इज या तो मैं गूगल करूं या फिर मेरे माइंड में वो लोगो होना चाहिए कि अच्छा दार्जिलिंग टी का इस टाइप का लोगो है. अगर कोई प्रोडक्ट के ऊपर ये लोगो है तो इट मींस दैट इज अ GI प्रोडक्ट. मींस एवरी प्रोडक्ट इज हैविंग इट्स ओन GI लोगो टिल दिस स्लाइड. उससे क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगी. मे बी इसका सिमिलर से अगर किसी ने बना दिया तो वो फेक वाली चीज आ जाएगी. हाउ कैन आई डिफरेंशिएट कि नहीं ये ओरिजिनल वाला है, ये आपका फेक वाला है. तो इसका मतलब मुझे ये सारे लर्न करने पड़ेंगे. कीपिंग दिस चैलेंजेस इन माइंड, तो एक नया कॉन्सेप्ट आया दैट इज अ GI लोगो एंड टैगलाइन, एंड दैट इज अतुल्य भारत की अमूल्य निधि. दैट इज अ टैगलाइन, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, विद दिस ट्राई कलर लोगो. और ये ट्राई कलर लोगो हमने मोस्टली हमारे मैप्स में लोकेशंस के लिए देखा होगा, मोस्टली ये लोगो आपका यूज होता है. तो ये दिस इज अ जनरल लोगो. इफ एनी प्रोडक्ट इज हैविंग दिस लोगो अलोंग विद दिस टैग लाइन, इट मीन्स दैट इज अ GI प्रोडक्ट. यू कैन हैव इट, यू कैन यूज इट अपनी आंखें बंद करके. आप बड़े ब्लाइंडली उस चीज को यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपको वो फीचर्स मिलेंगी ही मिलेंगी. And few details related to this GI tag. Actual में ये जो टैग की अगर मैं बात करती हूँ, that particular tag was launched in 2018. 2017 में एक कॉन्टेक्स्ट अरेंज किया गया था, and this tag is particularly the result of that particular contest. And if I am talking about the contest, the winners of this contest are from Kolkata and Ghaziabad, and they are awarded with some prize money, that is 5,000, and entries, 9118 entries were there during this tag. Now, if I am talking about this location symbol, this particular location symbol has its own history. If I'm talking about the history, mean designed is in such a way that it contains the acronym for GI. G word is also there, G alphabet is also there, and I alphabet is also there. And the color combination, it bears the tricolor, which is a color of our national flag, which fixes a sense of pride, as the GI product is very much associated with our traditional knowledge, with our culture, with our environment. That's why the tricolor is there. And general location symbol, indicating that GI holds certain specific qualities attributable to its place of origin. Means the GI product is very much concerned or associated with its location also. These are the few, you can say, drafty guidelines. मीन्स अगर मैं जनरल बात करती हूँ, GI टैग में यूज कर रही हूँ, आई कांट चेंज द टैग लाइन, कलर कॉम्बिनेशन, कुछ भी मैं इसमें चेंज नहीं कर सकती. आई हैव टू यूज इट एज इज, चेंज नहीं हो सकता. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनरशिप ऑफ दिस, ओनरशिप राइट्स आर विद DPIIT, और ये जो है ओनरशिप राइट इनके पास है. ये कैन यू कैन से शेयर और द सर्कुलेट any information anytime with respect to this logo or the tagline. If I am talking about some interesting facts, as of now 370 products are there under the GI list, and the Karnataka is having the highest GI tags, 47 products, followed by Tamil Nadu that are 39 products, and some of the major products of GI is Mysore silk of Karnataka, first product in 2004 and 5, Darjeeling tea, state having highest Karnataka, country having highest number of GI tags, country that is Germany, the second number China,
as I am from Haryana, for the Haryana state, 2 GIs are there, Basmati and Fulkari. And these particular GI products, Haryana shared with Punjab and the other parts of the states also. Now come to the case study. If I am talking about the case study, first is case study is Tea Board of India and ITC Ltd. केस स्टडी की समरी देती हूँ छोटी सी समरी में अगर मैं जनरल सी बात करती हूँ इन 2004 and 5 टी बोर्ड obtained a GI tag on a Darjeeling tea. In 2010 टी बोर्ड filed an infringement or a complaint against ITC Limited. क्यों उन्होंने किया? क्योंकि उन्होंने अपने उसमें वर्ड यूज किया जो उनके होटल्स थे या बाकी चीजें थी जैसे दार्जिलिंग लाउंज. टी बोर्ड इज सेइंग कि दार्जिलिंग इज आर जीआई टैग, आईटीसी यूज कर ही नहीं सकती इसको. बट कोर्ट की क्या कंक्लूजन्स आए? जो जीआई टैग है दैट इज ऑन प्रोडक्ट नॉट ऑन सर्विसेज. मींस टी बोर्ड को जो जीआई टैग मिला हुआ है वो दार्जिलिंग टी के लिए मिला हुआ है. आईटीसी इज यूजिंग द दार्जिलिंग वर्ड फॉर इट्स लॉन्च, नॉट फॉर द प्रोडक्ट एज इज. दैट्स वाई जो ये था, ये पर्टिकुलर जो कंप्लेंट थी, इस कंप्लेंट को सप्रेस किया गया, विद द डिसमिस किया गया एंड विद द फाइन ऑफ ₹1 lakh. If I am talking about the second case history, that is a Bangla Rasgulla and Odisha in 2015. ओडिशा ने क्लेम किया कि ये पर्टिकुलर जो रसगुल्ला है ये फर्स्ट टाइम जगन्नाथ टेम्पल में सर्व किया गया था. दैट्स व्हाई इट शुड बी अ जीआई टैग ऑफ आवर स्टेट. इन 2016 वेस्ट बंगाल अप्लाइड फॉर द जीआई टैग. 17 ओडिशा वेस्ट बंगाल को जीआई टैग मिला रसगुल्ला पर. इन 2018 ओडिशा ने अप्लाई किया जीआई टैग के साथ, जीआई टैग के लिए रसगुल्ला उसके लिए, बट विद डिफरेंट फीचर्स. मीन जो उनके रसगुल्ला का टेस्ट था, कलर हल्का ब्राउनिश में, जो आपका स्वीट मीठापन था हल्का कम था, टेक्सचर दैट इज टोटली डिफरेंट विद द रसगुल्ला ऑफ वेस्ट बंगाल. That's why even Odisha also got the GI tag for its region rasgulla, and these are the two pictures of that actually. And if I am talking about the India versus Pakistan Pashmina shawl, this is again छोटी सी एक वो बात करते हैं उसमें. इसमें क्या था आपका? श्रीनगर बेस्ड क्राफ्ट्स डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट filed an application with the geographical indication registry in Chennai to protect Pashmina weavers from other claiming to be authentic. But the Rawalpindi Chamber of Commerce and Industry challenged the claim. The grounds are Pashmina shawls are also woven in the Pakistan area region, so the India can't claim the Pashmina trademark in the traditional market. India ये नहीं कह सकता कि पश्मीना शॉल हमारे यहाँ से है. The chamber filed a complaint with the registry. क्योंकि हमने अभी ये कहा है कि आपके जर्नल में वो पब्लिश होता है, एनीवन कैन चैलेंज दैट. और ये केस आपका कॉम्प्लिकेट कब हुआ? एक और लोकल बॉडी जो इंडियन लोकल बॉडी थी, द कश्मीर हैंडमेड पश्मीना प्रमोशन ट्रस्ट, ऑल्सो सर्व्ड एन ऑपोजिशन नोटिस. बट लेटर दोनों जो इंडियन ग्रुप थे उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग जो ये जीआई टैग है दोनों शेयर करते हैं, हम जो रीजन है उसका एक्सपेंड कर देते हैं. राइट. बट अब नाउ द क्वेश्चन इज, जो आपका जीआई टैग है वो इंटरनेशनल लेवल पर दो कंट्रीज अभी तक शेयर नहीं करती हैं उसमें. नाउ स्टिल इट्स इन कंसीडरेशन. क्या होना चाहिए? अगर मैं इंडियन दोनों की बात कर रही हूँ कि नाउ द टू लोकल बॉडीज वो दोनों आपस में कंबाइन हो गई है, बट स्टिल द कंसिडरेशंस आर देयर कि अब जो पश्मीना शॉल है वो इंडिया और पाकिस्तान बोथ आर क्लेमिंग फॉर दैट. व्हाट टू डू? द रिजल्ट्स और द कंक्लूजन्स आर स्टिल पेंडिंग फॉर दैट. दिस इज द लास्ट केस हिस्ट्री, दैट इज अ मध्य प्रदेश वर्सेस Apeda Basmati rice. If I am talking about the Apeda, that is an Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority. And this is actually the plain areas in the state Punjab, Haryana, Uttarakhand, Delhi, UP, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir.
they all filed for the GI tag for the basmati rice. Fine. This was approximate 77 districts actually. And in this, after the years of battle, 7 Indian states came in the list of GI tag in 2016. The claims rejected by the GI registry. Actually, after that क्या हुआ, जो मध्य प्रदेश का एरिया था, मध्य प्रदेश के एरिया में उन पर्टिकुलर एसोसिएशन उन लोगों ने फाइल किया, कंप्लेन किया कि नहीं, मध्य प्रदेश के एमपी के इस पर्टिकुलर रीजन में भी जो बासमती राइस है वो कल्टीवेट किया जाता है, और वो जो कल्टीवेट किया जाता है वो अगेन सेंचुरी से बहुत सारे सालों से किया जा रहा है. एंड एज पर द एम्प्लॉयबिलिटी इज कंसर्न, इतने नंबर ऑफ पर्सन, इतने नंबर ऑफ फार्मर्स ऑलरेडी उससे अर्निंग ले रहे हैं. और वो जो एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करती हूँ, इतने टन्स ऑफ राइस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रीजन इज ऑल्सो एक्सपोर्टिंग टू वेरियस कंट्रीज. ये इनकी वो आई. लेकिन अब उस चीज में जो आपका कैच था या चैलेंज था वो क्या था कि ऑलरेडी जैसे हम कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन के लिए ये चीज की जाती है. जितना रीजन आपका बढ़ता चला जाएगा उतना वो डिल्यूट होता चला जाता है. अगर उस पर्टिकुलर एरिया को इंक्लूड किया जाता है तो जो रीजन का एरिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना. और उसके बाद भी जो आपकी फीचर्स निकल कर आई या फिर जो भी कमेटी थी, एक्सपर्ट आपकी IPAB कमेटी थी, ICAR कमेटी थी, उन लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज को आफ्टर दैट वो मद्रास हाई कोर्ट तक गए, उस पर्टिकुलर चीज को उन्होंने अभी तक रिजेक्ट किया, उस चीज को अभी तक नहीं माना गया है. एंड स्टिल वो चीज आपकी अंडर कंसिडरेशन, अंडर आपकी हियरिंग्स में प्रोसेस में है. And this is related to the, you can say, battle against Madhya Pradesh versus APEDA, that is for the GI product Basmati rice. And this is all about the case studies related to GI. And this is my last slide of the session, you can say. If we sum up the complete session, we must say GI is one way to recognize the artists, producers, to scale up their earning, जिसमें हमने higher value की बात की, facilitate the protection of collective rights of the rural and indigenous communities from their similar products, ensuring the entire community stand to the benefit of the knowledge and knowledge remains in the public domain. नॉलेज की कोई वो नहीं है, वो कैसे बन रही है, कैसे वीव हो रही है, एवरीथिंग इज इन द डोमेन. आपको उस चीज को मेंटेन करना है, उस पर्टिकुलर एरिया में करना है. इफ यू आर डूइंग दिस, इफ यू कैन डू दिस, आप उन पर्टिकुलर एसोसिएशन से कनेक्ट कीजिए, अपनी चीजों को आप प्रूव करवा लीजिए मे बी, और या फिर आपके एंसेस्टर्स ऑलरेडी उस चीज का पार्ट थे, यू कैन डू दैट. एंड दिस इज एक्चुअली द, यू कैन से, सैंपल ऑफ GI certificate which is issued for any GI product to the associations, organizations or the NGOs. And now I am open for any query and other things. Thank you very much, Dr. Sapna Gambhir, for that excellent session on geographical indications. आपने बहुत ही सिंपल वे में एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझाया, और हमारे स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं वो काफ़ी बेनिफिटेड होंगे इस टॉक के वजह से. एंड I would request you to stop the sharing, please. Sure. Thank you so much. और हमारे यहाँ पे इग्नू के फैकल्टी मेंबर्स प्रेजेंट हैं, रीजनल सेंटर के डायरेक्टर्स हैं, और देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब के भी फैकल्टी मेंबर्स प्रेजेंट हैं. तो मैं सबको इनवाइट करना चाहूँगी, अगर आप लोग अपना व्यूज़ देना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम. डॉक्टर भारत भूषण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नमस्कार. मैं सबसे पहले सपना चौधरी जी को, सपना गंभीर जी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ इतने अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए और फुल ऑफ कंटेंट. इनफैक्ट जैसा मैं डॉक्टर भारत भूषण मेरा नाम है और मैं स्टूडेंट सर्विस सेंटर में काम करता हूँ, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में हूँ, और मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ. इनफैक्ट आई हैव डन माय PG research from Jawaharlal Nehru University in geography. After seeing the topic of your talk,
I was fascinated to listen you. I spared some time and I very carefully attended full program of yours. That was wonderful. And जो आजकल जो डिमांड है आज की सपना जी, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, and to understand the basic things about localized products, that is very much needed. I congratulate you for that. और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी में भी जो आपने लोकलाइज प्रोडक्ट की बात की थी अभी, आप बनारस की, आगरा का पेठा, तिरुपति के लड्डू, एंड हमारा देश तो इतना इट इज फुल ऑफ सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, सच टाइप ऑफ पोटेंशियल्स एवरीवेयर. और हमें अभी एक प्रोजेक्ट भी मिला है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से, स्किल डेवलपमेंट से. उसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में जो जाने जाते हैं अपने लोकलाइज प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे बम्बू जो प्रोडक्शन है नॉर्थ ईस्ट में, आपका क्राफ्ट का काम होता है छत्तीसगढ़ में, जगदलपुर एक्सेट्रा में. तो आपका जो लेक्चर है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर NCID इस लेक्चर को कहीं पर यूट्यूब पर ये रहता ही होगा, जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इग्नू में और जो ज्योग्राफी के भी स्टूडेंट्स हैं, ज्योग्राफी में एक थॉट्स में एक पेपर होता है इसमें वॉन क्यूनन का जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है कि व्हाई इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड एट सम प्लेस, व्हाई दे आर स्पेस लोकेशन स्पेसिफिक, आयरन स्टील, और आपका जो आपने बताया कॉटन इंडस्ट्रीज या बनारस की या पेठा, ये सब उसी से ड्राइव करते हैं. तो मेरे ख्याल से हमारे स्टूडेंट्स को आपके लेक्चर से और हम सभी को बहुत ही इनसाइट नॉलेज मिला है. एंड आई थैंक यू एंड कांग्रेचुलेट यू फॉर दिस सपना जी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू ममिता जी. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. हमारे पास डॉक्टर पीयूषा शर्मा जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब की, उन्होंने एक सवाल पूछा है. मैं इनवाइट करूंगी डॉक्टर पीयूषा, आप कुछ पूछना चाहेंगे सवाल? आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं. मैं पढ़ देती हूँ आपके सवाल को जो आपने चैट बॉक्स में लिखा है. आपने लिखा है कि एज अ यूनिवर्सिटी वी आर वर्किंग ऑन टू अप्लाई फॉर GI. We have identified certain products that have traditional ethnicity for GI. As per patent office, we need to be either producing the product or associated with industry for the same. Is it mandatory? Please guide. Dr. Sapna, please. सर पहले तो इस चीज के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगी आपको कि एकेडमिक्स में होते हुए और एकेडमिक्स को हम लोग अपने जो नियर बाय लोकेशंस है, हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है, उसमें से बहुत क्या बोलेंगे यूनिक चीजें निकाल कर आप लोग GI के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं. सर इस चीज के लिए बड़ी अच्छी क्लैपिंग है आपके लिए, मैं ये कहूंगी. सेकेंड थिंग, मुझे ये लगता है कि जो पेटेंट ऑफिस ने आपको इंडस्ट्री के लिए ये कहा, हो सकता है जब हम GI प्रोडक्ट की बात करते हैं, हम लोग कमर्शलाइजेशन की बात करते हैं, मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेचने की बात करते हैं. बीइंग अ यूनिवर्सिटी अगर मैं बात करती हूँ, यूनिवर्सिटी मीन्स वी आर इन एकेडमिक फील्ड. अगर आप एक प्रोडक्ट का GI लेकर आ रहे हैं तो पेटेंट ऑफिस ने आपको इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन के लिए इसलिए बोला है क्योंकि या तो देखिए यूनिवर्सिटी खुद को इतना सेल्फ सस्टेन प्रूव करे कि ये प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, ये प्रोडक्ट हम बनाकर मार्केट में एज अ इंडस्ट्री हम बेचेंगे, हमारे इंडस्ट्री का प्रोडक्ट बिकेगा. अगर वो आप बना नहीं सकते या फिर कोई और रिस्ट्रिक्शंस हैं, है ना, तो GI टैग मिलने के बाद उसे बनाएगा कौन, मार्केट में कौन बेचेगा. इसलिए आपको पेटेंट ऑफिस जो है वो इंडस्ट्री एसोसिएशन की बात कर रहा है. उस चीज के लिए आपको सोचने के लिए, अगर आपको लगता है कि नहीं हम लोग सारा उसमें मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, हम एज अ इंडस्ट्री मार्केट के लिए फेस बनेगी हमारी यूनिवर्सिटी, तो आप उसको उस हिसाब से आपको वो चीज आपको प्रूव करनी होगी, उन चीजों के आपको कह लीजिए अपने स्टैंड्स सबमिट करने होंगे. ओनली देन यू कैन प्रोसीड फर्दर
as a university for the application of GI product. Thank you, Dr. Sapna. Dr. Piyusha, yeah, she's responding. Thanks, ma'am. So, thank you very much. So nice. हमारे पास और किसी का कोई comment observation है? Would anybody like to say something on today's topic? Which observations हैं? So if we do not have any observations or comments, let us end today's session. I would like to thank our expert, Dr. Sapna Gambhir, for sparing her valuable time to deliver this wonderful and inspiring talk. I thank all the directors and heads, regional directors, faculty members and academics of IGNOU for attending today's session. I would like to extend my special thanks to the faculty members of Desh Bhagat University, Punjab for attending today's session. I thank Mr. Rajesh Sharma, Head of the Public Information Unit, for providing NCIDE with the Facebook Live platform and ensuring the smooth conduct of this session with utmost dedication. I thank Dr. O.P. Sharma, Director NCIDE, and my colleagues, Dr. Jyotsna Dikshit and Dr. Sujata Santosh, for their untiring support. I thank Mr. Pawan Kumar and Mr. Praveen Chauhan for extending their assistance in the smooth conduct of this program. So this brings us to the end of today's session. Hope to see you next week. Till then, namaste. Namaste.